एवरीवन, प्रिया। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। आज का मेरा थंबनेल देख के आपको पता चल ही चुका होगा कि आज मैं फिर से एक रिक्रिएशन वीडियो बनाने वाली हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू रिक्रिएट दीपिका पादुकोण's वेरी फेमस ऑस्कर सेरेमनी लुक। आई लाइक दिस लुक वेरी मच। में एक बहुत ही सोफिस्टिकेशन है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप यू गाइस विल लाइक इट टू। So without wasting any time, let's get started. At first, I will moisturize my skin by using this Cetaphil moisturizer. ये वाटर बेस्ड होने के कारण से ये समर फ्रेंडली भी है और बहुत अच्छी तरह से स्किन में ब्लेंड भी हो जाती है। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस Maybelline Fit Me फाउंडेशन। मैं इसको डायरेक्टली अपनी फेस पे ऐसे डॉट डॉट करके अप्लाई कर लूँगी ताकि इसका वेस्टेज ज़्यादा ना हो। उसके बाद एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं इसको अच्छी तरह से पूरी फेस पे ब्लेंड कर लूँगी। इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो यूज़ अ ब्रश फॉर ब्लेंडिंग। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस Maybelline Fit Me कंसीलर। इसको मैं इस तरह से डॉट डॉट करके आँखों के नीचे ऐसे अप्लाई कर लूँगी एंड देन मैं अपने फिंगर की मदद से इसको इस तरह से ब्लेंड कर लूँगी। Next I am using this neutral shade from Wet n Wild eyeshadow palette. I am applying this all over my lid क्योंकि दीपिका ने भी ऐसे ही न्यूट्रल कलर का आईशैडो लगाया था। इसके बाद मैं इस शिमर आईशैडो को अपने इनर कॉर्नर्स पर अप्लाई करूंगी to brighten up my eyes. Next I will be applying eyeliner. This is the most important step of this makeup. As you can see how beautiful Deepika's wing eyeliner is. तो मैं भी उनकी तरह आईलाइनर लगाने की कोशिश करती हूँ। And here you go. आँखों को थोड़ा डेप्थ देने के लिए I am using काजल a little bit to my lower lash line. If you want, you can use brown eyeshadow too. Now for filling the gaps and defining my eyebrows, I am using a brown eyeshadow from my eyeshadow palette. दीपिका ने अपने इस लुक में जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया है वो है कॉन्टूर का। So I am using this contour powder from this face palette to contour my face. Next I am using this pink blush for making this look more fresh. I am using this highlighter from the same face palette to highlight my cheekbones and give a party look. For lipstick, I am using here the two shades of Maybelline Cosmetics. One is Burgundy Blush and another is Nude Nuance. I am using this dark brown shade for outlining my lips. And then I am going to fill my lip with the Nude Nuance. This is a so beautiful nude shade. I just love this shade. Next I am curling my lashes using this lash curler. It makes your eyes look really bigger. Next I am using this Maybelline mascara for giving my eyelashes more volume. दीपिका अपने लुक में कोई भी फॉल्स लैशेस का यूज़ नहीं किया था, इसलिए मैं भी फॉल्स लैशेस को यूज़ नहीं कर रही हूँ। And last but not the least, this is highlighter. I am using this highlighter to the bridge of my nose and then by using a brush, I am using to the collarbones. It really gives you a celebrity look. And here I am. Ta-da! Guys, this is my final look. आपको मेरा ये लुक कैसा लगा प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई बिलीव ऑडियंस इज द बिगेस्ट जज। एंड इफ यू लाइक माय टुडेस लुक प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आगे से जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। So guys, that's all for today. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.